गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग वेस्ट बंगाल सेट 2018 का जो सोशियोलॉजी जो क्वेश्चंस है उसके बारे में हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आप लोग तो जानते ही हैं वो 100 क्वेश्चंस है, तो मैंने तीनों पार्ट में वो डिवाइड किया है। तो आज पहला पार्ट हम लोग कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम लोग डे आफ्टर टुमारो या फिर टुमारो हम लोग नेक्स्ट पार्ट भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Question number 1. Sustainable development is that kind of the development which meets the needs of the present generation without compromising the ability of the future generation to meet their own needs. So sustainable development जो है वो है present generation है without any compromising, मतलब कोई भी compromise ना करके जो फ्यूचर जनरेशन को अपने नीड्स के लिए एबल या फिर काबिल बनाते हैं। सो दिस इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो आंसर विल बी बी। The sovereign socialist secular democratic republic of India has chosen the path of the development which is may be described as socialist, capitalist, Gandhian and mixed. So the answer will be D, mixed. Which of the following factors is not related on the construction of Human Development Index? That is the net national income. So what is the net national income? Net national income is defined as the gross national income minus the depreciation of the fixed capital asset. Like किसके लिए नीट नेशनल इनकम, किसके लिए फिक्स्ड कैपिटल एसेट मतलब क्या है? लाइक बिल्डिंग्स, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक दिस। सो ये है नीट नेशनल इनकम। Mark the correct option which is viable sociological explanation of poverty in the capitalist societies. People are poor because they have suffered the chronic irregularity of the work and the low wages. So D is the right answer. They are afraid to work, nahi. Suffer the low intelligence and the shiftlessness, nahi. Come from the problem of the families, nahi. ये रेगुलरली ये कैपिटल सोसाइटी में ये लोग पॉवर्टी को कैसे ये लोग पॉवर्टी को एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे? पीपल आर पुअर, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में पीपल पुअर क्यों होता है? ABC 3 रीजन में से कोई भी नहीं होगा 4th रीजन। Mark the pair which does not find a place of the inventory of pattern variable despite by the Talcott Parsons. So the answer will be quietism versus aggressivism. So quietism क्या है? The quietist heresy was, that is the scene of the wrongly ये जो क्वाइटिज्म है ये थोड़ा बहुत गलत तरीके से ये एक्सप्लेन होता है, क्योंकि इसका एक्चुअली एक्सप्लेनेशन जो है दैट इज द कंटेम्पलेशन over the meditation intellectual, that is the stillness over the vocal prayer. So ये vocal prayer के थ्रू इंटेलेक्चुअल जो स्टिलनेस है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं, तो इसी को क्वाइटिज्म हम बोलेंगे। एग्रेसिविज्म जो है वो तो आप लोग जानते ही है, एग्रेसिवनेस किसको बोलते हैं, तो वही है। एक है शांत, स्टिलनेस, माइंड का स्टिलनेस रहता है, एंड दूसरा है एग्रेसिव। एग्रेसिवनेस में माइंड कभी भी एक जगह में स्टिल नहीं रहता। अकॉर्डिंग टू आर के मार्टन क्या है? ये चारों स्टेटमेंट के मध्य जो है राइट आंसर विल बी एंटिसिपेशन सोशलाइजेशन इज फंक्शनल ओनली within a relatively open social structure with the social mobility. Mark the, according to the Emile Durkheim, not functional for human and social organisms. So the right answer will be class conflict.
that is the parturition, religion, crime, ये सब कुछ इमाइल दुर्खैम के अंदर ह्यूमन सोशल ऑर्गेनिज्म के अंदर पड़ता है, लेकिन क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं पड़ता. The number of the people organized for the specific purpose is known as the association. That Indian sociology lays, that is the confluence of the sociology, Indology has been the average by, that is the Lois Dumont. Lois Dumont कौन है? ये फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट है डुमोंट, that is and ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे. The Indian pioneer of the sociology who draw our attention to the role played by tradition in promoting stability and change in India society was D.P. Mukherjee. So D.P. Mukherjee कौन है? Dhurjeti Prasad Mukherjee, known as the D.P. Mukherjee, was Indian professor and sociologist. He known as the, ये मैंने पहले भी हम लोग क्लास लिए हुए चुके हैं, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दे. The list of needs, that is the social system, as envisaged by Talcott Parsons, does not mention. Talcott Parsons ने जो mention नहीं किया है, that is the adaptation, latency, integration, ये सब कुछ उन्होंने mention किया, लेकिन assimilation को उन्होंने mention नहीं किया था social system में. तो assimilation क्या है? The process whereby the individuals or groups are defining ethnic heritage are also also forbid into the dominant culture and the society. This is called the assimilation. According to the Darendorf, that is the imperatively coordinate associations based on किसके ऊपर? Coordinate association किसके ऊपर based है? That is the hierarchy of authority position. The sociologist who sought, that is the integrate conflict theory and the structural functionalism, was the Louis Coase. तो लुइस कोसे कौन है? जर्मन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट है. वो 66th प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट एसोसिएशन इन 1975. On his renunciation of Hinduism, Ambedkar embraced, that is the Buddhism. Sikhism नहीं, Christianity नहीं, Jainism नहीं, उन्होंने on her that is the renunciation is, according to the Ambedkar, is Buddhism. The development of Indian civilization has been, according to the N.K. Bose, is result of the number, answer will be number 4, diversity of culture, that is the accompanied the economic organization for the independence of communities in India. That is the, यहाँ पर जो इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट है, उसको मार्क करने के लिए बोला है. डेविड हार्डमैन was applied the subaltern perspective. डेविड हार्डमैन कहाँ subaltern perspective को अप्लाई किए थे? नंबर डी, that is to explicit the efficacy of the process of the Sanskritization in the tribal world. Mark the correct statement. That is, the secularism is a sine qua non for building a strong nation of India. यहाँ पर हम लोगों को ये right answer है, लेकिन sine qua non क्या है? Sine qua non मतलब क्या है? The compulsory जो features होता है, कुछ चीजों का कंपलसरी फीचर्स होता है. जैसे कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मेरा कुछ कुछ फीचर्स, मुझे लड़की क्यों बोला जाएगा? क्योंकि कुछ कुछ फीचर्स जो है जो मेरा कॉमन है और जो होना ही पड़ेगा. देन पीपल विल कॉल मी यू आर अ गर्ल. सो इसको हम लोग अगर बंगाली में कहेंगे तो अपरिहार्य जो शर्त बा गुण बा वैशिष्ट्य, दिस इज साइन क्वा नॉन, इसका मतलब वही है. So mark the correct statement in world system theory. So the right answer will be, the world is viewed as a single
thought conflict-ridden economic system. Which of the following is not the characteristics of the community? Community का जो characteristics है उसमें कौन नहीं है, कौन सा चीज नहीं है? जैसे कि historical heritage होगा, specific locality होगा, a social, religious, occupational और other groups sharing common features, ये भी होगा. जो नहीं होगा वो है a small patches of the locality spread over many areas. So ये जो है ये नहीं होगा, number C. The main purpose of the relative deprivation approach has been to, that is, the answer will be C, assess the deprivation of a section of the population as compared to the other. Which of the following issue has been raised by the women's organization in the post-independence period? So the right answer will be replacements of male worker by the trained female workers. So ये जो है ये raised by the women's organization of the pre-independence period में ये था, ये नहीं था, not been raised. That is the replacement of the male worker by trained female worker. एक मेल वर्कर को रिप्लेस करके एक फीमेल वर्कर को ट्रेन करना ये नहीं था. यहाँ पर बुक्स का लिस्ट है, यहाँ पर मेथड्स है. क्या राइट आंसर यहाँ पर दिख रहा है कि बी. सो स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी इज ऑब्जर्वेशन क्लास स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न ब्रिटेन. अमेरिकन सोल्जर जो है उसका जो होगा दैट इज द इंटरव्यू एंड इसके बाद जो है दैट इज द सोशल मोबिलिटी एंड सोशल मोबिलिटी जो है उसका राइट आंसर होगा दैट इज द क्वेश्चनरी एंड द लावाइदा उसका जो राइट आंसर होगा दैट इज द केस स्टडी. The British and land, the tenure system, where ownership right of the land was handed over, that is directly to the individual cultivators and made him accountable to revenue payment, was known as the Rayatwadi system. The concept of the that is the depeasantization was developed by the V. Lenin. The term footloose labor in India developed by the Jen Bremer. So footloose labor क्या है? Concept of the footloose labor in India consists of those that is the proletariats who are pushed out of the agricultural labor to market. तो जिन लोगों को push किया जाता है ये जो फूट सोल्जर है, फूट लूज लेबर है, इनको पुश किया जाता है किस लिए? दैट इज द इंडियन कंसिस्ट ऑफ दोस proletariat who is pushed out, that is the agricultural labor market. agricultural labor market में इन लोगों को पुश किया जाता है. Who is the following is not associated with the mode of the production debate in the Indian agriculture? So the right answer will be A. Desai. यहाँ पर भी विलेजेस है एंड सोशियोलॉजिस्ट है. सोशियोलॉजिस्ट कौन से विलेज के ऊपर काम किया है? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, फिर भी मैं बता रही हूँ. जैसे कि डी नंबर 3 दैट इज द बिशीपाड़ा इज 3 किसने काम किया था? FG बेले ने. एंड रामपुरा में किसने काम किया था? MN श्रीनिवास ने. दैट इज द शमीर पेत में किसने काम किया था? SC दुबे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट that is the वंगला में काम किए थे TS एब्स्टेन ने. The campaigning annihilation of class enemies was the part of the which following peasants movement? कौन सा peasant movement में annihilation of the class enemies ये part था? So the right answer will be Naxalbari movements. The dominant features of the globalization usually does not include, that is the strengthening of the nation state. Who of the
following Indian sociologists use, that is the participant observation, as the main tool of his research. So the right answer will be MN Srinivas. So thank you so much. That's all for now. इसके next part को लेके मैं next class में आऊंगी. So till then, goodbye.